Hi, welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. We are back and हमने कहा कि चलो ठीक है ऑलरेडी हमने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच जो चल रहा था उसके ऊपर पूरा एक सिनॉप्सिस दे ही दिया है। हमने कई सारी चीजें बातें करी थी कि मतलब यार ऐसे कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको। आपका आपका स्पॉट कभी भी मतलब क्या कहते हैं एक ऑलरेडी डेंजर जोन में आ चुका है, आपको कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। क्या करें। जब हम बात कर रहे थे साढ़े ना। पाँच सौ 500 रन बना के, और ये भी हमने बात करी थी कि ये हो सकता है। और ये प्लीज आप जाके देखिएगा हमारे ये जो फ्लैट बुलीज ट्रैक करके हमने एक वीडियो डाला था। ठीक है, उसने उसमें हमने उसमें ये मजाक में क्लियर बोला था, कट बोला पता है, है। क्लियर कट बोला है कि ऐसा हो सकता है कि पासा पलट जाए और पलट गया, और ऐसा गंदा पलटा कि तीन जो लोग जिन्हें कहा था कि भाई पिलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हमारे किंग बॉब्जी, बाहर। दोनों पाकिस्तान क्रिकेट एक हम्म, जगह से, जब हम कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हम्म, ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, अब हाँ, इसका एक सोल्यूशन निकालना है, हाँ, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन को निकालने से पहले एक और प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी। तो ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये है क्या, ये चीज क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चीज है। भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है, जेसन गिलेस्पी ना फ्रस्ट्रेट हो गया, पता है। मतलब चलो मेरी पहली सीरीज, मैं कोच हूँ, ठीक है, मुझे जिम्मा दिया गया है कि आपने ना इस टीम को ये खिलाना, ठीक है जी। मैं आपको पास आके बोलता हूँ दैट पीपल विल नो द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट पाकिस्तान विल प्ले, एंड फेयर इनफ। एंड यू हैव अ न्यू कैप्टन हु हैज लॉस्ट अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। यू एंटर्ड पाकिस्तान, you already probably have heard a lot of things about Pakistan cricket, how it functions, how its governments function, how selections committee change, and you spoke extensively in one of the reads about how many times the selection committee has changed and the internal issues. अब मैं भाई जेसन गिलेस्पी हूँ, मेरे को ये हैंडओवर मिला है, पर मेरा क्या है, मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ आता हूँ कि कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता है, हेड ऑन फेस करते हैं, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स गैरी कर्स्टन के साथ नोट्स एक्सचेंज हुई होगी, वास्तु व्हाइट बॉल में क्या कर रहा है, ओके भाई व्हाइट बॉल में हम बाबर आजम को बोलेंगे कि कैप्टनशिप छोड़ दो, ठीक है, प्रेशर ऑफ हो जाएगा। आई थिंक दिस मूव इज अ reminder for a lot of people that if you give बाबर आजम द रीजन कि हाँ बाबर आजम को आपने रेस्ट दिया है, आई एग्री, ठीक, ओके, बाबर आजम को आपने रेस्ट दिया है क्योंकि व्हाइट बॉल रेड बॉल सब खेलते हैं, आई एग्री कि भाई फटीग आ गया, जो भी आ गया, ठीक है जी, थोड़ा उसके बाद। बट शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को किस चीज का ब्रेक मिल रहा है, लाइक व्हाई आर यू रिप्लेसिंग योर स्ट्राइक बॉलर्स, एंड why are you not even keeping them in the 15? If you want to keep, if you don't want to keep them in the 11, I agree, but why are you, I mean, how is this, I don't think this is a move to showcase strategy कि भाई हम ये टेस्ट मैच इनके बिना भी जीतने की कोशिश कर सकते हैं, कर सकते हैं। दिस मूव इज मोर ऑफ अ रिप्रिमांडेशन of something that I feel is not related to skills or cricket. It's something to do with mindsets. It's something to do with the way that what Pakistan want to play cricket, but somehow they're not being able to align these three players. That could also be one of the biggest reasons why such big names have been dropped. So yeah, it's surprising to see that they did this so early in the middle of a series. Okay, it's not like you've done it when a new series is going to come, and then you're going to see players and do it in the middle of the series. You just said, you know, Which is अपने not very अपने surprising. Which is not very surprising. Honestly, had they even dropped Shan Masood, yeah. ठीक है, right in the middle of the series, it wouldn't have been a huge surprise to me because it's Pakistan cricket and anything can happen. ठीक है, एंड बीइंग ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, चलो ठीक है यार, तूने बोला कि क्या कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी और इसको क्यों मिल रहा है ये ब्रेक, ठीक है। Hmm. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बाबर आजम को भी क्यों मिल रहा है। चलो ठीक है, आपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला, आपने डिफरेंट डिफरेंट लीग्स में पार्टिसिपेट किया। द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट, यू नो, a recent issue. If you actually Hmm. look at Babar Azam's, record for the past 2.5 years, or probably even 3 years for that matter, right from 2021, it hasn't been that great. Okay, and he's been what, averaging somewhere around 28, 32, something like that, somewhere between that. Okay, and for you to be counted as or
let's say for example अगर वो छोटे से मतलब यार he was the child prodigy, and then when he came and in the Pakistan setup as well, everyone was like, oh my god, this is the new player and everyone, and in fact उसने जिस तरीके से वनडे क्रिकेट अपनी खेली और जिस तरीके से अपनी टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेली, आई थिंक ही स्कोर्ड समवेयर अराउंड 12 centuries in what a span of some 3.5 years. I probably might be wrong, with the numbers of or the number of centuries here. I'm not contesting that, but what I'm trying to say is that in the initial years of his career, ठीक है, he was in fact being considered कि नहीं यार अब शायद ये फैब 4 नहीं, अब फैब 5 होना चाहिए. फाइव हो सकता है, तो हाँ. समझ रहा है मेरी बात को. And then comes in a period where of course he's not in touch and he's not winning games, whether it's T20, his approach to T20 of course comes into questioning. His captaincy styles comes into questioning, where people are saying that he's not very proactive with setting fields, he's not very proactive with selecting the bowlers, etc., etc. The opposition is always a step or two ahead of him. You look at the number of games or the kind of games that Pakistan has lost, in fact, under his captaincy, especially the one that I'm talking of, is in Chennai last year in the World Cup against Afghanistan. These are huge setbacks, and of course, what happened in USA against USA in this year's World Cup. So these are big setbacks. What Pakistan has gotten in a world event, and you need to understand that. And Pakistan में ना सिर्फ एक ही गेम, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उनके पास और कहीं जाने को है नहीं, उनके पास बस घूम फिर के बस ये एक गेम है, उसके अलावा और कुछ नहीं. So that needs to be understood, and he hasn't really lived up to that expectation. Fine, if you're giving him a break and you think that कि हाँ चलो ठीक है, विराट कोहली भी एक महीने के ब्रेक के बाद ये वापस आया था. It can be the case that probably if he doesn't touch the bat for another 2.5 months or so, probably once he comes back with a fresh mindset, and then he informs, of course. But middle of the series, and और मेरे दिमाग में ना ये चीज आ रही है now. एक सिचुएशन था, ग्रेग चैपल जब आया था इंडिया में, ठीक है, एंड आई थिंक वन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट वाज मेड बाय एन एक्स क्रिकेटर एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज दैट इवन सचिन्स प्लेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, वो इट वाजंट ही वाजंट वेरी श्योर कि मतलब यार वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है. एंड व्हाट sort of came down from the top level was that कि यार चलो ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर की जगह पक्की नहीं है, हुआ मैं तो हमारी तो बिल्कुल पक्की नहीं होगी. मैं सुरेश रैना मेरी जगह पक्की है क्या, मैं एज एम एस धोनी मेरी जगह पक्की है क्या, मैं एज मोहम्मद कैफ मेरी जगह पक्की है क्या. सो एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग दैट वे, राइट. सो दैट इज वन साइड ऑफ द दिस थिंग आर्ग्यूमेंट. Second is, ठीक है, you look at India's squad today, ठीक है, and we'll speak about whatever happened with Bangladesh and all that. But just to give you an idea, ठीक है, there's so much competition. Sanju Samson spoke about so much competition. Wicket keeper के slot में, you've got a Dhruv Jurel, you've got a Jitesh Sharma, you've got a Rishabh Pant, you've got a Sanju Samson, etc., etc. Now this competition is in fact making you feel कि नहीं यार, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट ही सेड इन द इंटरव्यू. यार व्हेन आई गो बैक एट टाइम्स, व्हेन आई से यार नहीं यार संजू, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री यू हैव टू परफॉर्म, right? So the second aspect is that you think of the competition and you think that even you are replaceable as Babar Azam or the king of Pakistan cricket or this and that. And then everyone starts thinking that way, that nahi yaar, in order to cement my place in the side, it's very important that I be consistent. So there are two ways of thinking at it. So either dropping someone like Babar Azam can be a huge blessing in disguise for them, or it can just add to the shambolic nature of Pakistan cricket that we've seen so far. What do you think out of these two cases? ओके सो ओके, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक क्रिकेटर बन गया था एक टाइम पे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर. आई मीन एवरीवन वाज लाइक बाबर आजम हमारा बाबर, व्हाटएवर. दे वर ऑल रिलायंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेयर एंड हिज स्किल्स. नाउ obviously if you see the way he has performed over the years in the sense when he started, etc., how you said he had centuries, everything. I'm just trying to think, why would I drop my best or someone who's been one of the finest cricketers or batsmen in Pakistan suddenly in the middle of the series? It also could be motivated by the fact that Babar Azam himself would have said, boss, you know what, wait, there is something which I need to improve in my technique, okay, which is going to take time and it can't be fixed overnight or before a second test or a third test.
So why did you do one thing? Allow me that time. Let me fix that for you. And in the meanwhile, why don't you try out your bench strength? Because as Pakistan very realistically said that हमारे पास bench strength नहीं है. आपके पास अगर बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब आपको लगता है कि यार यही जो बेस्ट है वो है हमारे पास, जो बाकी है जो खेल रहे हैं भाई, टीम तो खेल ही रही है ना, 15 लोग कहीं ना कहीं तो खेल रहे हैं तो So in आई a way, थिंक you're saying that you're killing the second aspect of the argument, wherein you're saying that there's actually no competition. So the only way that Pakistan actually sees is that it's going to be a blessing in disguise. that's what I'm saying. Do we know there is a competition? Because you've never tested your bench. Hmm. So we don't know if there is competition or not. And I don't think the fact that people are worried about is my place going to be there or not is based on performance. I think it's based on the attitude. It's based on how much are you willing to do for Pakistan as a team. Okay, how will you keep your differences aside if you have any, and are you willing to do that what the team wants you to do, or are you going to be this one player who says, oh, I'm the star here, I am one of the finest bowlers, or I'm one of the finest batsmen, I know what I'm doing, I don't care if others play or not. So I think that is more of a message that goes to players saying, just pick everything up, सब कुछ इकट्ठा कर लो तुम लोग, ठीक है, और हम एक टीम की तरह जाते हैं, अरे देखते हैं कि रिजल्ट आता है. And but in case of Babar Azam, I always felt that he never came across someone who was like, oh, I'm not going to do this, I'm not going to do that, I don't care about Pakistan, I don't care about his team. I think he genuinely comes across as a Maybe player not who, in public. Maybe not in public, but you never know. See, I mean, what my thing is that there's so much talk about the unity in the side. There's so much talk about कि यार groupism है and all that, इसका एक group बन गया, उसका एक group बन गया, that and this and whatever it may be. My thing is कि मतलब यार बिना मतलब ना rumors भी नहीं उठते ऐसे. तो समझ रहा है मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? of course, of So course. it is highly possible that there might be let's say small multiple groups within the side, and probably there's hardly any unity. Let's say for example, and it can be the case, I'm not saying that it is, but from what I feel like, from whatever I've heard in the past few months, etc., from the captaincy issues, the PCB chairman changing, etc., this and that, all of that, Shine Shah Afridi coming in, then he coming, then he going back, and then Babar Azam coming in, and then Babar Azam resigning, etc., etc. भाई अगर बर्तन खनक रहे हैं तो यार आवाज ऐसी नहीं आएगी. तू समझ रहा है मेरी बात? आवाज इसलिए आएगी क्योंकि यार एक्चुअली आवाज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, राइट? एंड मे बी and when these three names came out, these at this point in time, at least Shaheen Shah Afridi and Babar Azam, ठीक है, and they are the biggest names right now in Pakistan cricket, ठीक है, and one can contest कि हाँ चलो ठीक है यार कि ऐसा maybe Naseem Shah is not as big as Shaheen Shah Afridi. I'm not contesting that either, but I'm just saying कि क्या कहते हैं, these three are very very important for Pakistan team to actually deliver results. But when these three names came in and they said that they're probably dropping them, maybe are they part of let's say for example, is there a Shaheen Shah Afridi group, is there a Babar Azam group, and then I don't know Rizwan is like, oh my god मैं कहाँ जाऊँ, या फिर मेरे को बस खिलाओ, मैं बस जाके मतलब ऐसा ऐसा करके फिर उसके बाद शॉर्ट बॉल खेल के फिर वापस आ जाऊंगा. क्या करना है उसको, क्या करना क्या है, मतलब what is वही that? मैं बोल रहा हूँ ये कोई टैक्टिकल डिसीजन नहीं है. दिस इज अ डिसीजन दैट इज बेस्ड ऑन Improving the setting a environment. culture or a mindset or something. It's not a decision that's based on skills, or it's not a decision to win your second test match. It's I genuinely feel Step that. ahead, and it can be a huge step ahead. Do you Maybe, also hence I say realize that it's there a is a new blessing. selection committee that's coming before, and their first decision against Aleem Dar and all of this is to say, you know what, Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, you guys need to go. The first decision that the selection committee makes. That also shows that yeah, ऊपर से order आया होगा कि boss, you want to take harsh decisions. You do what is right for Pakistan cricket, and if you want them to go, ask them to go. That's absolutely fine. And Naseem Shah just injury से वापस आ रहा था यार. He just recently got injured and coming back, but I genuinely am very curious to know that why these three players. The selection committee comes in, or they just want to make a splash. Boss, you're the new selection committee. You know what? Bang, bang, bang. Everywhere in the media, oh, selection committee takes tough decision. Babar Azam drop, Naseem Shah drop. We're trying to bring reviving everything. It's the most,
if we had to look at something, okay, Is it about fitness? Can it be about fitness? no, it We cannot were be about discussing this fitness. in the last podcast as well कि मतलब यार किस तरीके से थके हुए भी लग रहे थे वो लोग, and you could actually make out मतलब you would actually see and figure out, there's this a massive difference in the way how English bowlers conducted themselves on the field while they were there, for about whatever time period, for 149 overs or something, and 150 overs, by the Pakistan bowlers. So whilst they were there, English bowlers still had it in them after, of course, 2 days of them batting. But of course, after 2 days rest, to come out there and deliver result for their team. But had it been Pakistan in their case, first of all, they wouldn't have reached 800, whatever, 800 or something, 826. But even if they had, okay, would Pakistan bowlers, probably had come out with the same intent, or with the same energy, or with the same fire? I really felt that, because somewhere down the line fitness, भाई उनके सांस फूल रही थी और वो दिख रहा था टीवी पे, ठीक है, which is not a great sign, when you're actually playing international cricket, especially at home, that you're not able to adapt to your own conditions, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे को कभी कभी लगता है कि यार इनको आर्मी के पास आपने भेजा, ट्रेनिंग वेनिंग कराई, इन लोगों का फिटनेस कराया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, वो बट तो यार स्टिल somewhere, I don't know if it was a marketing gimmick it or I was, it don't was, know what it was, but it yeah, it was was. just absolutely, and चलो ठीक है यार, it somewhere involved some amount of investment of time and energy of you know Whatever, at least shooting a video. yeah, huh? At least shooting a video showing so whatever. Okay, so I'll tell you what. शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है कि बॉस टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी जरूरी है, और वो 3-4 बार एक ही चीज बोल गया, 20 विकेटें लेनी है, 20 विकेट। और इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक बंद हो गया। इस बार भी बंद हो गया माइक। फाइन, दैट इज जस्ट जोक। 20 विकेट लेनी है, 20। सो दैट मींस समहाउ ही इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग योर बॉलर्स लाइक शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। आप मेरे स्ट्राइक बॉलर हो भैया, आपने 20 विकेट क्यों नहीं निकाली? आपने क्यों नहीं एक्सप्लॉइट किया? इसने सामने जवाब दिया होगा, वो तो ठीक है, तू टिक क्यों नहीं पाया? My thing is, if you're questioning your bowlers, चलो ठीक है, नहीं हो पाया मुझसे, why aren't you questioning your batters? सेकंड इनिंग्स दैट्स देखा व्हाट तुम दैट लोगों रिप्लाई। ने? अब सेकंड इनिंग्स यार, मतलब शान मसूद ने बोला है उसमें, उसने पहले ही काउंटर कर दिया था इस पॉइंट को, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में आपने बढ़िया खेलना होता, हमने तो बढ़िया खेल लिया। हाँ, सेकंड इनिंग्स में हम सर्वाइव नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में हम बढ़िया खेल गए। व्हाट नॉनसेंस। ही सेड दिस। अबे यार ये थोड़ी होती है बात यार, जब एक्चुअली प्रेशर है, जब मैच आपको जिताना, सॉरी, सेव करना ही करना है किसी भी हालत में, व्हेन यू आर एक्चुअली अंडर, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू कम टुगेदर एज अ टीम, यू हैव टू परफॉर्म टुगेदर एज अ यूनिट। वो बेचारा अकेला, वो जमाल लगा हुआ था यार, बेचारा आमिर जमाल, बस वही लगा हुआ था यार। थोड़ा बहुत सलमान आगा ने किया जो भी तो मैं किया वही बोल रहा हूँ आगे ना, वो पीछे, तो नहीं बट पता। तो फिटनेस इश्यू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिटनेस नहीं है। फिटनेस इशू इन दो, शाहीन शाह अफरीदी और नजीम शाह का मेरे को लग रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है पर्सनली, क्योंकि आई यू कुड सी दैट यार व्हाइल यू आर वाचिंग द गेम, यू कुड लिटरली सी दैट, एंड अगर अगर आई डोंट नो इफ आई हैवंट कंपेयर्ड द स्पीड्स एंड ऑफ इंग्लिश बॉलर्स एंड एटसेट्रा, आई एम 100% श्योर विदाउट इवन लुकिंग एट इट दैट समवेयर डाउन द वो लाइन, क्या कहते हैं, इंग्लिश 136-35 बॉलर्स पे हो वर, गया। हाँ। 136-35 पे अटक गए थे वो थोड़ी देर बाद, मतलब उसका तो हो गया था कि You भाई, can't do क्योंकि यार। that, and especially on tracks with this where there is nothing for you, at least pace to there. Do you also realize that English fast bowlers are, because of the home conditions that they play in, they are on county conditions, they are used to bowling longer spells. However, Not in in the same condition. Pakistan, अरे यार, बोल रहा हूँ कि काउंटी में इंग्लिश क्रिकेट में 30-30 ओवर, 25-25 ओवर फास्ट बॉलर, हर एक एंड से फास्ट बॉलर हमेशा रहता है। In Pakistan, mostly because of the pitch conditions, there are more spinners operating from both ends. However, in this case, and in Bangladesh matches also, and ये matches में भी तो देखेगा तो फास्ट बॉलर्स ने बल्क ऑफ दी ओवर्स डाली है। शाहीन शाह अफरीदी 26 ओवर, नसीम शाह 31 ओवर, ठीक है। सो they are also not used to bowling such long spells, whatever the conditions may be. But England is used to Gus Atkinson because of his county experience, because of his bowling so much in England. He उनकी फिटनेस लेवल उनकी उन्होंने बना के चले थे वो, एंड उतनी ओवर वो डाल पाए। बट अगेन आई एम सेइंग, इफ इट वाज फिटनेस, इट वाज एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट द इश्यू बॉस। इट हैज टू डू विद something that the selection committee decided and said, you know what boss, we need to drop three of you and make some really drastic changes. Either you go back, okay, improve your red ball cricket, somehow play the Azam, do whatever you want, because we'll see if you will play in the next, because yeah,
अगर आप लास्ट अगर 3 मैच के बाद or not निकाल play लेते anything, or not play anything if you really want to rest them. नहीं रेस्ट Just give them what some it time is off not about rest. from the game. It is not about rest. It is about something more that has to do with I am temperament. saying I started my statement with that. It can be a Yeah. huge change in the culture, and that's probably one of the reasons why these three people have been taken out. क्योंकि यार एक groupism बन चुका है. Probably you never know, and that is what probably Jason Gillespie wants to kill. There can be various things, and these are just factors. Fitness is one factor Hmm. that I mentioned. ठीक है, culture is one factor. ठीक है, that we mentioned, and apart from that, there are multiple. It can be, I mean, internal or external factors कई सारे हो सकते हैं ना यार. यार ये You भी तो never हो know. सकता है Technical कि flaw can be one factor. कि भाई चलो ठीक है, form, maybe giving rest to someone, and probably that might be a strategy. There can be multiple reasons for that, right? और But there और is it could just be just one reason. or it could be There is just just one of one those reason. or it और could be just किस- one of क्या कह or रहा it है? could be one or it could be one of those reasons कि हम नई सिलेक्शन कमेटी आई है प्लेयर बदल देंगे हमारी सिलेक्शन कमेटी मजा आएगा निकाल दो Absolutely, सबको जुगाड़ दो absolutely, and you can वो expect that with Pakistan. You can actually expect that with अभी Pakistan. अभी हमारा So डन है there can हमारा be डन है तो five हम reasons. करेंगे There can be five reasons, and out of these five reasons, one has to be the major issue, and that one will actually decide or make and break, ठीक है, Pakistan cricket for the next 5 years. ये तो पर मेरे को लिखवा एक चीज भी लो, लगी पता है मेरे को ये एक चीज लिखवा और भी लो. लगी देख मेरे को ऐसा लग रहा है देख ऐसा अभी मेरे को ऐसा लग रहा है अलीमदार थोड़ा सा ना सेंसिबल बंदा होगा ठीक है उसने खेलते हुए देखा होगा इन प्लेयर्स को बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एज क्लोज एज प्रॉब्ली कोचेज इन नेट प्रैक्टिस एक्सेट्रा जितने भी मैच में आई ऑल्सो फील उसने देखा होगा कि बॉस आप कंप्लेन करते हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेंच नहीं है जो अच्छा करते हैं उनको परफॉर्मेंस उनको टीम में तो लेके आओ जो अच्छा कर रहे हैं जिनको मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऐसे प्लेयर्स लेके आओ जिनको पाकिस्तान के लिए खेलना है जिनके लिए इट इज नॉट भाई भाई मेरी पोजीशन फिक्स है मैं तो कहीं नहीं जा रहा मैं तेल लेने गए सब बट people who are willing to play for Pakistan, people who are willing to learn, people who are willing to change and adapt. And that is the biggest thing. Are these three players willing to change and adapt to the style that Gillespie and Masood want it? Maybe no. And that's of course they'll say things like That is they are why the world class groupism, players, ना. etc. But That is huh? why the groupism, ना. It is as simple as that. मैं क्यों किसी के हिसाब से चलूं? जब पाकिस्तान क्रिकेट मेरे हिसाब से चल रही थी या चल सकती थी इन शाइन्स केस और बाबर्स केस चल रही थी, मैं क्यों किसी के और के हिसाब से चलूं? मैं बॉब्जी द किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. आई एम शाहिन शाह अफरीदी. आई हैव my own ego. I'm this bigger player. I earn this much in PSL. I play B leagues across the world. Why should I listen to someone whose average was 20, Hmm. and he's been made captain before Hmm. being made captain. His average was 20, somewhere in the 20s, if I'm not wrong, some 25ish, somewhere He between has the 25 to lowest. 30. He has the lowest average from 23 to 24. Babar Azam. Then there is players from I'm talking Bangladesh. about Shan Masood. Shan Masood, even before he Yeah. became captain, Shan Masood, his average was somewhere between 25 to 30. I don't remember the number, but it was before it is Hmm. before this ये 150 जो इसने मारा है ना अभी इस वाले टेस्ट मैच में, Hmm. उससे भी पहले. ठीक है, Hmm. इसके जितना भी ये पूरा टेस्ट करियर था, आई थिंक समवेयर अराउंड 25 to 30 के बीच में है इसका टेस्ट करियर. Hmm. ओ सॉरी, टेस्ट Hmm. एवरेज. एक बार जाके देखना जरूर उसको. आई एम 100% श्योर ऑफ दैट. तो ऑफ कोर्स पीपल माइट क्वेश्चन इट कि यार तुम कैसे इस बंदे को जो है क्या कहते हैं वो बना रहे हो. Let's say, for example, had they made Rizwan or someone like Rizwan as the captain of the team, I don't know how it would have probably changed the future or the present right now of Pakistan. But Hmm. I'm just saying, Shan Masood, I mean, was just out of the box and then out of the blue कि हाँ चलो ठीक है यार यार शान मसूद, or maybe they would have seen Hmm. something in him. ठीक है, maybe Hmm. एक leadership quality देखी होगी or something of that sort यार. मतलब you never really know, right? Hmm. Until now we've not been able, we've actually not been able to figure out as to why he's the captain. ठीक है, because he Hmm. hasn't shown anything. ठीक है, Hmm. apart from all the press conferences and the media highlight or his reasoning for the losses that have happened so far. So somewhere down the line, I think वो चीज अभी रह गई है. But moving तेरे on, को the same एक pitch. हाँ, तेरे को पता है एक और प्लेयर को ड्रॉप किया जिसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है सरफराज. सरफराज अहमद को भी ड्रॉप किया सरफराज है को तेरे भी, को हाँ. से और बोला खान सरफराज, और हेडलाइन तूने अलीम दार का बात किया ना. अलीम दार इज अ ह्यूज फैन ऑफ सरफराज. उसने पता है स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले, ठीक है, कि हम्म आई थिंक क्या कहते हैं, सरफराज इज वन ऑफ द मोस्ट ये ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव कैप्टन.
You know, and it's after a very long time, you know, we've seen someone like Sarfaraz, you know, and in fact he showed that in the 2017 Champions Trophy somehow they won it. I'm not saying that it's only because of Sarfaraz, but चलो ठीक है, वो जो भी करता था, गुस्सा होता था, डांटता था फील्ड पे, जो भी करता था, मतलब he But probably he was wasn't the involved. most He was coolest, yeah, involved. but He he was still involved. had a better strategy in you know, in his mind than a lot of other people, is what is being claimed by you Hmm. know, those people who've Hmm. actually made statements and you know, Hmm. seen these two people with you know, with in close quarters. So वो चीज है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन उसको खिलाए पिलाए आपने जो है क्या कहते हैं, बिठा दिया है यार सरफराज को. हाँ, ये So भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जैसे अभी तूने बोला द पिच इज गोइंग टू बी द सेम एक्सेट्रा, इन लोग ने सोचा देख यार फास्ट बॉलिंग में तो हो नहीं रहा, ठीक है बांग्लादेश के सामने भी देख लिया, इंग्लैंड भी देख लिया, हमारे फास्ट बॉलर छोड़ो, इनके ज्यादा तगड़े हैं हमसे, तो क्या करें क्या करें क्या करें। तो श्रीलंका क्या कर रहा है, वो भी ड्राई एंड स्लो बना रहा है, बांग्लादेश भी ड्राई एंड स्लो बनाता है यार, इंडिया भी कभी कभी स्पिनिंग विकेट बनाती है, तो हम दो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले लेते हैं एज रिप्लेसमेंट, कामरान गुलान एंड मेहरान मुमताज, दोनों स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको ले आते हैं, इतने सारे राइटी हैं उनकी टीम में, मजा आ जाएगा, एज लगेगी, शान मसूद स्लिप में खड़ा हुआ कैच करेंगे, स्ट्रेटेजी चेंज, ये भी हो सकता है। बट मेरे को ये लग रहा है कि ये बेंच स्ट्रेंथ एंड रिवॉर्डिंग प्लेयर्स हु प्लेड फॉर पाकिस्तान अंडर 19 players who've done well in Qaid-e-Azam and looking at what the future is, and why I'm saying future is because Sarfaraz Ahmed को is the बोला कि सर देखो, right in the middle of the series, right in the middle of the हाँ series you मतलब want to नई नई reward all सिलेक्शन का people who've done well in भाई, कहते हैं. अगर अगर नई सिलेक्शन अबे भाई अगर सिलेक्शन कमेटी है, तो सिलेक्शन कमेटी से पहले ये क्यों बोला कि आप एक ही टेस्ट मैच की टीम बनाओ, अब तीन सीरीज की टेस्ट में बना देते हैं कि भाई तीन, अब तो टीम ये करती है ना कि पहले टेस्ट मैच में ये टीम होगी, दूसरे तीसरे में ये होगी, अब तो ऐसा करते हैं वो, अब ऐसा तो नहीं कि भाई पूरी सीरीज भेज दिया आपने प्लस होम है, तो कर दिया। अब मुझे एक समझ नहीं आ रहा, नुमान अली को अब लेके आया हो, 38 साल का बेचारा, एक बार उसने श्रीलंका में बढ़िया बॉलिंग की थी, इफ यू केप्ट नुमान अली इन द टीम, व्हाट यू केप्ट हिम एज अ मेंटर, नो राइट, गिव हिम अ चांस, गिव हिम द चांस, बट तो वही है यार। एंड अब मीर हमजा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी बांग्लादेश के सामने, उसको आपने बिठा अभी मिल दिया। जाएगा उसको चांस यार, नुमान अली को अभी मिल जाएगा चांस, इसमें हाँ क्या. यार, अब तो खिला लेना चाहिए यार, लाइक ही इज the really fag end of his career, and it would be great for him to represent Pakistan, and probably they need to understand that you can't outwit English bowlers in Asian conditions with fast bowling only. Like, I'm sorry, but you don't have a Jasprit Bumrah right now. You might have somewhere, but you've not selected him. But but what you You have might is even have probably someone better. You might even have someone better. You never really know, you man. never know. Of course, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लीज कि भाई क्या कहते हैं जसप्रीत, मैं I'm just saying that Pakistan cricket has had a rich legacy of producing great, one of the greatest fast bowlers ever, मतलब to have played the game in. And वहां पे आपको अभी फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा है भाई. अभी कुछ नया इन्वेंट करो ना, रिवर्स स्विंग इन्वेंट किया, दूसरा इन्वेंट किया, सईद अजमल बीच में आया था, उसका भी एक्शन बेचारे का खराब कर दिया। अभी अभी ये लोग नए नए वो वर्ल्ड कप के टाइम पे लेके आए थे ना, वो चिप लगाया है शमी का बॉल में, पता नहीं ऐसा ऐसा कुछ अरे बोलते हैं. वो तो ऐसे ही यार, ट्विटर है, लिख दो। तो ऐसा ही कोई चिप लगाए वाला फकर बॉलर जमान ने ढूंढ, ट्वीट किया है, ऐसे ही कोई चिप लगाने वाला बॉलर ढूंढ दो. फकर जमान ने ट्वीट किया है कि ऐसे कैसे बिठा दिया आपने बाबर को, आपको प्लेयर को ये देनी चाहिए, आपको प्लेयर को क्या वो सिक्योरिटी देनी चाहिए, ये देनी चाहिए। फकर भाई आप टीम में नहीं, अच्छा, वन वाइट बॉल, ओके। बाबर रहेगा तो मैं रहेगा. बाबर को लेके आओ, मेरा करियर खतरे में है. एक एक ना, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ उसका, एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ पाकिस्तान, करंटली इज प्लेइंग काउंटी, यार भूल गया मैं नाम। अगर नाम याद आए तो बताना यार, ही इज ग्रेट, अभी बहुत बढ़िया वो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, पता नहीं उसको क्यों नहीं लिया। कौन सी टीम में. यार ही प्लेस फॉर अ काउंटी, रुक जा एक मिनट, मैं भूल गया उसका नाम यार, भूल गया मैं। मोहम्मद अब्बास, हम्म. मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास was beautifully in the county, उसको I always thought कि यार they'll take him, हैम्पशायर के लिए खेलता है वो, I thought they'll take him, but that's different. But yeah, most coming back to the fact that I think it's about checking bench strength and keeping a certain attitude in check, saying, "Listen, boss, हम्म. you can go, you can also go." And बाकी प्लेयर्स को बोला होगा ना यार किसी, listen, अरे इसने यार आई ये थिंक टर्म लास्ट इंग्लैंड के साथ भी सीरीज खेला है मोहम्मद अब्बास ने. खेला है। लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर्ड पाकिस्तान, आई थिंक हम्म, मोहम्मद अब्बास वाज पार्ट ऑफ दैट दिस थिंग, हम्म, वाज ही. यार Because उसका लास्ट टेस्ट में I 2000, I उसका remember लास्ट, him very vaguely.
उसने लास्ट 2021 में खेला था टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के सामने किंगस्टन में। या नाउ आई नो, आई रिमेम्बर दैट। बट ओडीआई 2019 में तो, बट वही है यार, इट्स अबाउट जस्ट शफल एंड आई एम श्योर यार, जैसे प्लेयर्स लाइक सईम सईम आइब को डर लग गया होगा। हुजू, मैं मेरा लाइसेंस बोला था आपने, मारो जाके लाइसेंस। तो ऐसे प्लेयर्स को बोला होगा कि नहीं आप अभी आए हो, आपको एक लंबा वो मिलेगा, बट या यार भी छोटा है यार। काफी अंडर 19 प्लेयर्स लिए उन्होंने। मोहम्मद हुरैरा लिया है, कामरान गुलाम लिया, असफुल्ला लिया है विकेट कीपर, मेहरान मुमताज लिया है, एंड आई ओरेरा थिंक बहुत हम मारता है भाई, मोहम्मद ओरेरा बहुत मारता है वो। He's कौन, also मोहम्मद हुरैरा ना, हाँ अंडर मोहम्मद 19 का ओरेरा बहुत is a very attacking batsman, very गुड very प्लेयर। attacking. Go and तो watch ठीक है। his videos, मजा आएगा देख के। But same pitch, नहीं नहीं, इस बार टर्नर, इस बार पहले दिन से घूमेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत हो गया घुमाओ। इस बार पहले दिन से घूमेगा, एंड आई जेन्युइनली फील दैट वाइस कैप्टन ना सौरभ शकील है, तो अगला कैप्टन लाइनअप में सौरभ शकील ही होगा आगे जाते हुए, अगर खुदा ना खास्ता कुछ मतलब चेंजेस लाने पड़े। बट मेरे को अभी भी लगता है कि अगर शान मसूद को थोड़ा 1-2 साल देने चाहिए टू एटलीस्ट ट्राई टू चेंज द कल्चर, बिकॉज ही इज ट्राइंग, ऑनेस्टली आई लाइक हिम, ही इज ट्राइंग। मैच हारने के बाद भी जिस तरह से तहजीब से बात, अब लोग किसी ने लिख दिया कि आपने इंग्लिश उर्दू तहजीब से अच्छी ही बोलता बात है करेगा कप्तान बना यार। दिया। और कैसे बात करेगा तू, मेरे को एक बात बता, मैच हारने के बाद ऐसे ही बात करेगा? अभी आई ऐसे जस्ट बात आई करनी जस्ट फील ही इज पड़ेगी। वेरी लेवल, अभी माँ। आई जस्ट फील इज वेरी लेवल हेडेड, वेरी लेवल हेडेड। I genuinely feel he's very level-headed as a नॉट डिफरेंट। cricketer. So that's good. That's good for some. They need someone level-headed. Yeah, they need someone to make some sense. So yeah, but I don't know. Has Wasim Akram, Waka Yunus, he's part of the PCB, but has Wasim Akram or someone said anything about this? I haven't. I I've don't know. not They been able probably to. had written something about the PCB, or something about that in the book. And Wasim Akram, I mean, he's never called by PCB to actually help them out. So हेल्प देम आउट नहीं, बट कुछ तो ओपिनियन होगा ना भाई का, कि वो मस्त है मतलब भाई अपना ऑस्ट्रेलिया में लाइफ में। कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बैठा नहीं हुआ है। नहीं, बोला बोला हिसाब बोला किताब बोला। छापा है, बढ़िया कमा रहा है, उससे कोई चक्कर ही नहीं है। बोला होगा, आई एम श्योर बोला होगा। बट ठीक है। छोड़ दे बट अभी। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, वसीम मूविंग ऑन। अकरम का अगर न्यूज पढ़ेंगे ना तो नहीं, अच्छी न्यूज नहीं आ रही तो। एनीवेज हाँ, ऑल द बेस्ट यार, मूविंग आई ऑन। होप यू गाइस मेक अ डिफरेंस, यू आर अ गुड टीम, एंड करो यार अपने देश के लिए करो कुछ। और कुछ बोल वर्ल्ड तू। टेस्ट चैंपियनशिप तो भूल जाओ, बट देख लो अभी। चल, moving on to something else which makes Pakistan's case even worse, which is India defeating Bangladesh 3-0. Oh man, भाई व्हाट कैन सबको आई। छोड़ दे, ठीक है। 297 all this and that. I'll tell you one moment which I really enjoyed, ठीक है। मार धाड़ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, संजू सैमसन पागल हो गया है, सूर्य कुमार यादव पागल हो गया है, सब मार रहे हैं गंदी तरीके से। फिज आता है, फिज, ठीक है। पहला ओवर आता है, मुस्तफिजुर वो आता है, स्लोअर वन, ठीक है। पहला 118। वाला, ठीक है, पहला वाला उसको जो ऑफ साइड पे है, नहीं खेलना। दो दो ऐसे बॉल होते हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला है ना, ठीक है, उस बंदे ने खटैक सीधा करके, जो मतलब जो आवाज आया है बल्ले से, जो गूंज आई है मिडिल मिडिल से लग के, ठीक है, ओवर एक्स्ट्रा कवर फॉर अ सिक्स, द लॉन्गर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। हैदराबाद, just to इज remind अ all our viewers, is a लॉन्ग ग्राउंड, big ground. बिग ग्राउंड, बिग ग्राउंड। एक ही साइड छोटी 55, वो भी A 55। shot. What a shot. What an innings. And a delight for all Sanju lovers. फाइनली यार, मैंने पहले भी बोला था कि संजू सैमसन को लॉन्ग रोप देना चाहिए, ठीक है। उस वीडियो को हमारे सोशल मीडिया पर्सन को मैंने रिमाइंड करा के दिखाया भी था, जस्ट आउट ऑफ क्या बोलते हैं कि मैंने बोला था, मैंने प्रिडिक्ट किया था ये। बट हाँ, आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम, एंड आई थिंक वी शुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कुमारा संगकारा Hmm. एंड अ लिटिल बिट ब्रायन लारा आल्सो, Hmm. बिकॉज राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें वन डाउन उतारा, उस न्यू बॉल में उनको they actually were the ones who said, you know what, go play the new ball when coming down one down, and I think that is from where he got the confidence of playing in the initial overs, and then this selfless innings that
that he played really showcased that Sanju Samson is up there. मैंने बोला ना, if he plays proper cricketing shots, and आजकल ना I was thinking, आजकल अगर मैंने बोला कि यार proper cricketing shots मतलब क्या, cover drive, flick, pull down the मतलब along the ground. But then I realized that in this changing world of T20, a proper cricketing shot is something that you, when you cover drive, you can hit it over mid off and over extra cover also. That is also a proper cricketing shot. If you hit straight down the ground, it's a proper cricket. Even though it's a loft, even a slog sweep is now a proper cricketing shot. The only sort of different modern shots are the flicks and the paddle sleeps and the reverse sweep. Reverse sweep, मतलब आधा टेढ़ा बैट से. But संजू सैमसन डिड नॉट. हाँ, वैसे मारो ये प्रॉपर क्रिकेटिंग क्या, स्ट्रेट टक 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 वी में. और संजू सैमसन ने वी में तो खेला ही है, उसका वी एक्सटेंड भी हो गया इतना, तो स्क्वायर वी सब ले लिया भाई ने ऐसे. And that, as I said, did not play any rash shots which he's not comfortable with. Head It still, looks very body still. elegant. These are very Hmm? beautiful runs. Like someone like Rohit क्या क्या Sharma. कवर ड्राइव Rohit मारता है वो, Sharma मिड ऑफ मारता है का तो फील्डर beautiful runs गिरता लगते है, मिड ऑफ का फील्डर भागता है सिर्फ बॉल लेने के लिए, पता है, हैं. वो जैसे ही जाता है ना खुद भागने लगता है, पहले बॉल लेके आता हूँ मैं. So I think yeah, but ठीक है, when you ask about Bangladesh, I'll speak about Bangladesh. Speak about Bangladesh. तमीम इकबाल ने ना बोला था बहुत टाइम पहले कि यार हमारे पास ना सिर्फ शेर बांग्ला, आपके पास बीसीबी का पैसा तो आता है, लेकिन उसको आप री इन्वेस्ट कहाँ करते हो. बीपीएल इज वन ऑफ द मोस्ट disastrous T20 leagues in the world. I also found out that इंडिया के बाद सबसे बड़ी मार्केट बांग्लादेश में है क्रिकेट की, सबसे बड़ी. और उसके बावजूद भी वो compete नहीं कर पाते हैं किसी भी एक्सेप्ट दी आईपीएल, किसी भी They टी pay ट्वेंटी well. लीग के साथ. They pay well. इनकी They pay very well. हु- Bangladesh अरे का प्रॉब्लम हो public गया league. वो, वही तो. अरे तेरे को पता है रेवेन्यू शेयर नहीं करते वो, हम्म. रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं है उनका. तो आप अगर टीम लेके आते हो अपनी, तो जितना बीपीएल से पैसा आएगा वो नहीं मिलेगा, जितना ब्रांड वैंड है उससे पैसा मिलेगा आपको. इसकी वजह से बहुत कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल स्टार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते. जो और ओनर्स हैं, हाँ, जो ओनर्स हैं वो बैंकरप्ट हो गए. हाँ, हम्म. वो बैंकरप्ट हो गए, पैसे नहीं आए उनके पास, उनको ब्रांड से भी पैसे नहीं मिले. हम्म. और bankrupt हो गए in the sense they didn't have enough money to put into that. They wanted that money rather in different businesses. So they didn't go broke, but they didn't want to spend on the BPL. Then they called international players. Now the way the schedule, because the future tour programs of Bangladesh, उनका schedule ऐसे बैठता है कि वो ऐसे T20 IL T10 के साथ क्लैश कर जाता है. अब भाई सब तो वहां खेलने चले जाते हैं, तो मोइन अली आएगा, एक सेमीफाइनल खेल के चला जाएगा, कोई एक बड़ा प्लेयर आएगा, वो एक मैच खेल के चला जाएगा, या बोलेगा मैं जा रहा हूँ ऐसे T20. तो ऐसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स बांटते थे. फिर उन्होंने वो सब चेंज करने की कोशिश की, बट देन दे सॉर्ट ऑफ जस्ट, एंड शकीबुल हसन on air on a press conference said that this is not marketed at all. Imagine Shakibul Hasan, your biggest superstar, it's like Virat Kohli of Bangladesh, comes and tells you this is not managed properly, your rating is going to go down. वो उसने ये तक बोल दिया कि हमारी ढाका प्रीमियर लीग इससे बेटर ऑर्गेनाइज होती है. वो तो 2 दिन पहले पता चलता है मैं इस टीम से खेलने वाला हूँ, फिर अगले दिन में टीम को मिलता हूँ, अगले दिन खेलने चले जाते हैं. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. एंड तमीम इकबाल सेड कि यार शेरे बांग्ला स्टेडियम एक ही स्टेडियम है जो सालों से, ठीक है, आपने कोई फैसिलिटी नहीं दी, आपने कोई जिम वगैरह ये सब में काम नहीं किया. ठीक है, अब भाई रेड बॉल के लिए उन्होंने फास्ट बॉलर की बैटरी बनाई, आइलैंड उनको ले आई, वो ठीक है, लेकिन विकेट्स वही रखी है आपने, स्लो. बड़े बड़े स्कोर ना मारने आते हैं, बड़े बड़े स्कोर ना चेस करने आते हैं, ना डिफेंड करने आते हैं हमको. और ये पिच का बात जो है ना, वो मैं T20 वर्ल्ड कप से नजमुल हसन शांतो को सुनते सुनते थक गया हूँ हर मैच में. वी नीड बेटर पिचेस, वी नीड बेटर पिचेस. ये क्या इंटरनेशनल मीडिया को बता के प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं क्या वहां पे. हम्म. अब तो तानजिद वो आपका ये हाँ कौन है तो वो फास्ट बॉलर, तानजिम हसीम, तानजिद हम्म. हाँ, वो भी आके बोल दिया कि भाई पिच अच्छा होना चाहिए. अब इतने सारे चीज एक ही बोल रहे, तो जेन्युइन प्रॉब्लम होगा ना दोस्त. वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को अच्छी पिच मिलती है खेलने, तो हमें पता ही नहीं कैसे खेलना है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे हमें बैटिंग करना नहीं आता, हमको स्लो टर्नर्स चाहिए. And it was very evident with the way Rishad Hussain was bowling and Ravi Bishnoi was bowling. Rishad Hussain started at 84 kilometers an hour to Sanju. He got struck for 5 sixes, huh? By the way. He just won this thing and 6 sixes हो जाता. Bichara, he was flighting the ball, bowling in that 4 to 5 meter, 86, 90, 90 की speed पे, waiting for some turn. भाई वो भूल गया कि हैदराबाद में टर्न ही नहीं होता दोस्त. टर्न ही नहीं होगा तेरा बॉल, तू फ्लाइट करेगा. तू जिस तरह की लेंथ डाल रहा है, एक इंडियन बैट्समैन जो आईपीएल इतना अच्छा खेलता है, कितने मैचेस खेले होंगे उसने हैदराबाद में ऐसी पिचेस में, आराम से तेरे को मारेगा यार. बहुत हाई स्किल लेवल है इन बैट्समैन का.
वहां बिश्नोई 104 की स्पीड पे डाल रहा था, बिश्नोई 104, जुप जुप जुप, लेंथ 5 से 6, 4 से 5 नहीं, 5 से 6। हम्म। एंड इफ यू आर अ चहल, देन यू कैन प्रॉब्ली टर्न द बॉल अ माइल, बट रिशाद हुसैन को टर्न ही नहीं मिला बेचारे को यार। ही कुड नॉट उसका द उसका बॉल। सो रिशाद हुसैन इन दैट ओवर वेर यू सेइंग कि मतलब उसने 5 छक्के खाए, ठीक है, उसने पहले 4 बॉल अगर तू देखेगा तो पूरा का पूरा उसने टॉसअप किया है। टॉसअप हाँ, किया है, सेम लेंथ, ये कोशिश करिए कि जैसे ना कैसे कि बस इससे एक एज मिस लग होगा जाए। और एक बस क्या कहते हैं कैच हो जाएगा बस। इसका और कोई प्लान था ही नहीं। However, having said that, when you compare the speeds, I'm not saying that Rishad Hussain is not capable enough of actually, bowling टचिंग दैट at स्पीड, that speed. बट ही इज In नॉट द fact, काइंड ऑफ he can बॉलर। generate much more bounce also, considering the fact that his arm is coming हाइट, from a much हाइट। better height than Ravi Bishnoi's. Okay, he can generate that kind of bounce also. But वो ये सब ना करके जो लास्ट बॉल है वो राउंड द विकेट गया। और तो फिर भी भाई उसके कुछ बाद तो उसने करना जो है पड़ेगा ना, और लाइन चेंज करनी पड़ेगी, लेंथ चेंज कर, लाइन चेंज करके वो क्या किया मिडिल, उसने। मिडिल ऑफ से उसने मिडिल पे आ बल्कि जाए। और उसके लिए और ओपन किया ना यार। वो पूरा पूरा एक जो मिड विकेट वाला पूरा रीजन था उसने और ओपन कर दिया उसके लिए। इट और मेड इट इवन गेम, मोर एंड बिकॉज व्हेन यू आर एक्चुअली बॉलिंग, ठीक है, एज अ लेग स्पिनर, ठीक है, फ्रॉम अराउंड द विकेट टू द राइट हैंडर, यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन द डिफेंसिव। तुमने तो ऑलरेडी डिफेंसिव पे चले गए हो, सो दैट इज द माइंडसेट एंड संजू सैमसन कैपिटलाइज्ड ऑन इट because you वो can't get a wicket from there. Can you get a wicket भाई unless you उसने, are a Shane Warne? You उसमें can't क्या get हो it. गया, उसमें क्या हो गया, उसने वो टॉस अप कर दिया। Hmm. भाई तो अगर तुम बॉल ज्यादा आगे डाल दो, तो दूसरा बॉल किधर होगा? पीछे। अब ये पीछे ही रह गया बॉल। अब इंडियन बैट्समैन को लेंथ थोड़ी सी छोटी चाहिए, घूमेगा फट के मारेगा आपको, उसमें अब क्या कर सकते हो? इंडियन सो बैट्समैन को नहीं, ये किसी भी बैट्समैन को तुम दे दोगे ना वो लेंथ पे अगर वो बॉल वो मिड विकेट पे छक्का ही जाएगा भाई। और अगर वो उनमें से कोई और आईपीएल भी और तो वो नहीं खेलता और है वो यार। 4 छक्के मार चुका है, वो ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंट है। तुम एंड संजू सैमसन हैड वन दैट बैटल मेंटली क्या है राइट यार, थर्ड बॉल। वो पता चल गया Right था in the कि यार third ये ball, नहीं समझ he पा रहा है। won that battle mentally, and I think it was only because of his mental fatigue, or because he didn't know where to ball. तो नहीं समझ में आ ठीक रहा है, था यार, मैं करूँ क्या, बॉल करूँ नहीं Bangladesh, हो रहा। ठीक है, fielders, if you actually looked at their body language, if you actually looked at their They faces, they gave up. were clueless. They They gave didn't up. know where to bowl, what to bowl, how to bowl, to whom to bowl. कुछ नहीं पता था। They अरे were वो just लिटन, with the लिटन दास ने वो नहीं देखा, ऐसे थ्रो किया, बॉल ऊपर से and I चला tell गया। you another एंड अनदर बिग थिंग, ठीक है, वो लिटन दास का तो वो बोल रहा है ना, उसका एक तो वो गया था क्या नाम है उसका, तस्किन का ना एक बीमर चला गया, हाथ से छूट हाँ, गया। लिटन दास ने उसे पकड़ने की भी कोशिश नहीं जाने दिया उसने, जाने दिया उधर, जा भाई जा। ऐड ऐसी की तैसी मैं नहीं कर रहा, इंजरी विंजरी एंड हो गया। अनदर बिग एग्जांपल ऑफ हाउ बांग्लादेश एक्चुअली लॉस्ट इट साइकोलॉजिकली, ठीक है, दे वर नॉट देयर इन द गेम, इज दैट वो जो रन आउट मिसहैप हुआ था ना इनका बीच में, नजम नजम शांत ने मिस रियान कर दिया पराग और था। उसका, हाँ, दैट जस्ट आजम बन क्लियरली गया। गोज टू शो कि मतलब वो कुछ और ही सोच रहे हैं यार कि अगले ओवर में कितना रन पड़ने वाला है। वो दे वर नॉट इन द प्रेजेंट बॉल, ठीक है, इतना साइकोलॉजिकली डेंट कर दिया था इस पूरे इनिंग्स में, ठीक है। एंड इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रन, चलो ठीक है यार, आज आज 297 बना, कल को 314 के भी ऊपर बन जाएगा, ठीक है, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज दैट हाउ दिस एंटायर इनिंग्स एक्चुअली इम्पैक्टेड the opposition psychologically, and now what people are in fact thinking about the Indian cricket team, but because mind you, okay, this T20 team which actually scored 297, probably, okay, 9 of these people or at least 8 of these people might not even make it to the World Cup playing 11. It is a क्योंकि आपके fact. बुमराह आ जाएंगे, क्योंकि उसके सिराज बाद आ बुमराह आ जाएंगे, जाएगा, कुलदीप आ सिराज आ जाएंगे, जाएगा, ऋषभ पंत आ जाएगा, आ जाएगा। all of these people हाँ, will be back. तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो इंडिया ए सॉर्ट ऑफ स्क्वाड था यार। इंडिया का तो स्क्वाड भी नहीं था ये, अगर वो स्क्वाड होता तो रन ही नहीं बनते। और एक T20 है भाई जिसको देख के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो है आज का मैच, नहीं बात करेंगे, नहीं बात इंडिया करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बस भाई बस, ऑस्ट्रेलिया बस, बस भाई। और कितना परेशान करोगे, अलग अलग इतना जेंडर, अलग मैं अलग ऑलमोस्ट जेंडर जीत गए परेशान थे। करोगे। डेथ ओवर में एक दो अच्छा वो डाल देते ना इंडिया वाले हम लोग, तो मैच खत्म था आज। छोड़ नहीं यार, नहीं बात एक्चुअली पता करेंगे। है, मेरे को ना एक बहुत ज्यादा
जो भी है, एंड forget about analysis, forget about all that has happened with women's cricket and what is happening with Indian cricket, ये वो। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी अब कोचिंग करेगा या करने ऑफसाइड वाला है, मारना या जो भी सिखाओ। ग्राउंड लेवल पे जो कर रहा है, क्या कहते हैं, लेडीज की कोचिंग, कि प्लीज उन लोगों को ये बताइए कि लेग साइड की जगह, ठीक है, एक और जगह है ऑफ साइड जहां आप मार सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत प्लीज ये गेम डेवलप करना पड़ेगा, और सबके पास ये गेम नहीं है। आई एम अमेज्ड एंड आई एम सो, भाई, शेफाली वर्मा, ठीक है, फील्डर वहां पे है, मौजूद है, आपके लिए लगाया गया है, क्या जरूरत है वो मारने की? भाई सिंगल टैप इन करना, चलो ठीक है, यू वांट टू प्ले विथ इंटेंट, देन यू हैव द शॉट्स टू बैक इट अप। यू ओनली हैव अ लेग स्वीप, या फिर क्या कहते हैं ये मार अपना दिए 4 लोग। लॉन्ग मिड ऑन की विकेट, तरफ मार दिया, पहले मिड विकेट 5 की लेग तरफ लॉन्ग मार वाले दिया। मार ले सकते हैं, अब नहीं मार सकते। तेरे को मारो पता ना है मेरे को, यहाँ पे यार, क्यों तेरे को नहीं पता कर है पा रहे? तेरे को पता है अभी मैचअप, और तू ये बोल रहा है ना, मेरे को मैचअप से एक चीज याद आया। रवि बिश्नोई से पूछा कि आपने क्या किया, उसने क्या बोला पता है? मेरे को पता है कि नजमुल हसन शांतो को रिवर्स स्वीप खेलना बहुत पसंद है, मुझे पता था वो मारने वाला आउट हो गया। रवि बिश्नोई ने पहले 2 T20 खेले भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि नजमुल हसन शांतो को कौन सा शॉट खेलना पसंद है, और नजमुल हसन शांतो को रिवर्स स्वीप में थोड़ा सा और देख के खेलना बॉलिंग चाहिए मीटिंग कि में बता जितनी सकते हैं बार यार, आप बॉलिंग ऐसे मीटिंग आउट में हो बताया रहे रहेगा। हो। यू हैव मॉर्निंग मोकल देयर, you've got the analysts, etc मतलब etc। तू देख रहा है हर एक प्लेयर पे कितना, अरे इसमें क्या हो सकता है भाई यार, तू बॉलिंग डाल देना, हो गया है, अभी क्या तेरे को जान के क्या करना है, बट टू नो दैट एंड टू से इट आउट आउट सेइंग आई नो ही लाइक्स प्लेइंग रिवर्स स्वीप्स फॉर अ यंग गाय लाइक बिश्नोई, इट जस्ट शोज हाउ मच ऑफ इनपुट एंड प्रैक्टिस दैट गोज इन, बट यार सो काश ये थोड़ा बहुत डेटा मिल जाए ना, मजा आ जाए। क्या वो मालूम है क्या किया तूने। बट इंडिया चांसेस lie with पाकिस्तान now। This is a funny game, as Andrew Flintoff once told DJ Bravo. Been here too long, mate. It's a funny game. क्या करेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते अब, यार वेट फातिमा वेट सना क्या वापस है। आ गई है आफ्टर हर फादर्स डेथ, एंड शी इज बैक टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। She is our only hope. Fatima Sana is the is the hope for a billion people in India. Whosoever, of course, wants the women's team to at least qualify for the semi-finals, and don't want them, coming Like back. 12 lakh people who are at least watching on one of the Just 12 streaming lakh. apps. Just 12 lakh people watching. Yeah, just 12 lakh people. There were ठीक है यार, शुरुआत है। 0.34 crores or something like that. On 7.5 करोड़ था इंडिया बांग्लादेश संजू Jio सैमसन Cinemas, में, of course, gives 7.5। you cumulative figure देता है ना जियो सिनेमा, वो और भी है ये बट एक्चुअली वो लाइव तो फिगर कर दे सकते देता हैं है ना, हॉटस्टार। इतना क्यूमुलेटिव फिगर में इतना पैरिटी थोड़ी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैरिटी। आज का नहीं, मैच बट तो होना आई चाहिए था एम यार, आल्सो बहुत सेइंग बढ़िया कि मैच मतलब था। यार क्या पता है कि 12 lakhs करते 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 वो भी मतलब 12 करोड़ तक मतलब चल पहुंच एक गए। ही हजार लोग 12 हम लोग जैसे वो बंद करके, अरे अरे फोन मम्मी आ गई, बंद कर दो और वापस चालू कर दो ऐप। ऐसे में ही 10 बार हो गए। ठीक है। बट प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा मेरा एक बहुत ब्रोकन एक आज का है मैच देख कि लेना, यार बहुत आप इंटरेस्ट वुमेन्स आ रहा था। क्रिकेट में थोड़ा सा मतलब यार आप एक इनसाइड आउट शॉट्स, थोड़ा कवर ड्राइव, थोड़ा स्क्वायर कट, ठीक है, ये सब थोड़ी रेंज हर हीटिंग। किसी का एक ही स्ट्रेटजी है भाई, कि आप जो है सीधा बॉल डालो, ठीक है, उसको हाफ वॉली टाइप दो, वो मारने जोर से जाएगी, डालो, लेग जाएगा ही नहीं। साइड में मारने जाएगी और आउट हो जाएगी। जेमिमा रॉड्रिक्स, ठीक है, लेग साइड में मारने गई, ठीक है, आउट हो गई। क्या वो थोड़ा सा विकेट से हटके, क्या कहते हैं, ओवर पॉइंट मार सकते हैं? क्या वो इससे पहले मारा शॉट्स था, डेवलप कर इससे पहले सकते हैं? मारा था, इससे पहले मारा था। स्किल किसने तो है। मारा? पहले किसने मारा था मारा? जब एमर रोड्रिग्स ने, इससे पहले वाले मैच में हाँ, वो ईडन तो का के विरुद्ध। why is it not a regular shot? Why is it that you have to, भाई, you look at women's cricket, ठीक है, and I'm sure I haven't looked at the data, but just looking at the game, you can figure out that minimum 80% of the runs are being scored on the next side. Why is it that they are not able to develop? And I'm not talking about just one player. It is about the entire women's cricket. मतलब यार कि चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ये हो आपका बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी टीम, they are all aiming for just the leg side। 26 एंड सिंगल में बॉलिंग भी से ऐसे ही डाल रहे हैं वो लोग यार, कि हाँ चलो ठीक है, तू 26। मार लेग साइड पे ही मार, और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, सीधा सीधा मतलब आपको इन स्विंग कराते हुए, और इन स्विंग आपका मेजर डिलीवरी है, वो भी 80% है ऑफ द डिलीवरीज, और इन स्विंग कराते हुए कि भाई मार, तू सिर्फ लेग साइड पे ही मार, और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है यार। सो देयर हैज टू बी समथिंग, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ प्ले विद द फील्ड, आस्क द बॉलर कि नहीं यार, फिर उसके बाद अगर अगर आपका 2 शॉट लग जाता है ना,
तो बॉलर के दिमाग में भी आ जाता है कि नहीं यार मैं शायद इसको स्टंप पे नहीं डाल सकती, तो वो थोड़ा थोड़ा सा और इधर उधर, आप उसकी लाइन तो बिगाड़ो। लाइन बिगाड़ने का ही गेम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू रिस्क योर विकेट, विच इज नॉट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। डेथ ओवर बॉलिंग भी थोड़ा सुधार लो। मैच हाथ में होते हुए यार लास्ट में इतने रन देना, 40 रन 4 ओवर में, जबकि 5 विकेटें चुकी है। 6 विकेट आखिरी बॉल, चाहिए। आखिरी ओवर जीत जाते हैं मैच, पता है इतना वो नहीं था। But I think gone are the days when people are saying कि नहीं यार चलो ठीक है, well played, you won hearts ये वो। I think it's time that we take women's cricket seriously, and we also क्वेश्चन है, criticize in क्वेश्चन, a healthy manner, just पोलाइट how पोलाइट we are doing पोलाइट right now with इंक्वायरी, the men's cricket. पोलाइट It is इंक्वायरी। important that we criticize the women's cricket as well, and try and take that seriously, and of course appreciate them for all the good that they are also doing. But एंड बैक देम, I think gone are एंड the बैक days देम इन when द you're गिव। just playing for fun or saying कि हाँ चलो ठीक है women's cricket ये नहीं है, because this is serious. Women's cricket is actually becoming very very serious, and if you want to take it very seriously, then this is how it is. Unfortunately, India didn't bat well, and their bowling just gave it up today. I think they really weren't professional enough, like you mentioned in the death overs, and they probably could have been chasing somewhere around 140, but nahi yaar, ye under lights. This is a different sort of Dubai that we know from 2021. This is not that. लाइट्स के नीचे रन नहीं बन रहा है, लाइट्स के नहीं नीचे बन रन रहा, है। अनफॉर्चुनेटली। क्या करें। चलो जी, ये हो गया। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेगमेंट हो गया भाई, ये 3। अब एक अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेगमेंट, है। द बिगेस्ट सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेगमेंट। एवर, ठीक है। सरप्राइज गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दे आर और ये कॉल्ड द हो सकता अनकैप्ड है कि इंडियंस। ये भी एक 20 20 मिनट का सेगमेंट बन जाए, ठीक है। सो धोनिल, मैं एक काम करूंगा, ठीक है। मैं एक मोनोलॉग में चले जाऊंगा, ठीक है। एंड फॉर दैट अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू सी योर फेस, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू रीड अ फ्यू स्कोर्स मुझे एटसेट्रा। है भी नहीं भाई देखने के लिए, इतना खूबसूरत चेहरा थोड़ी है। कोई बात नहीं नहीं, यार, आदत है। why I'm saying this is because if you want to say something in between, interrupt or do whatever, सीधा हाथ खड़े करने की जगह बस बोल दे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को कुछ बोल, ठीक है, इतना बोल, फिर मैं रुक, ठीक है। बट अभी, स्टार्ट योर soliloquy। हाँ, ठीक है। बट guys, what we'll be discussing is of course something that is happening in India, which is Ranji, and Ranji Trophy has started, and that started on the 11th of October, and there are 16 games which are parallelly running. Unfortunately, the broadcasters, and of course, it doesn't really make commercial sense to obviously cover all 16 games. We would have loved to do that. We would have loved to see, all 16 games, probably being covered, etc., etc. But unfortunately, it's not happening, and of course, it doesn't really make commercial sense as well, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं देखते. And right now, Jio Cinemas is only playing 3 games, but we are also bringing a lot of things and a lot of scores. But just to give you a gist as to what happened in the other games as well, we're going to discuss that. I'm going to quickly run you through the 3 days action in each one of the games. Okay, I'll try and wrap it as fast as possible. Okay, I'll try and read the scores out, and then tell you the major performances from all these games as quickly as possible, and then Dhonil Bhai Saab will tell us 2 or 3 things which he felt a little close to his heart, and of course, something that broke his probably heart। all of you guys should know, whether it be a player, whether it be a team, that Dhonil Bhai Saab has decided. Okay? That is something that even I'm not aware of. So, whatever he has to say, he'll say after I read out the scores very, very quickly. ठीक है, शुरू करेगा? हाँ, आए ना तो बोल दे यार, थोड़ा तो मतलब यार। हाथ पर तूने बोला हाथ उठाओ, बोलना मत कुछ। अच्छा नहीं, बोलने को बोला, हाँ अभी तो बोल। बोला यार, बोलने को तो बोल रहा हूँ मैं यार। अरे तू, What is मेरे को this? लगा मोनोलॉग स्टार्ट हो गया है, तो मेरा अच्छा ये मोनोलॉग नहीं था यार। चलो जी, ग्रुप ए, ठीक है, त्रिपुरा वर्सेस ओडिशा, द फर्स्ट गेम, ठीक है, being played in Agartala. Unfortunately, rained out on the first day, rained out on the second day, rained out on the third day. So nothing from इसमें there. सारे दिन होता है तो नहीं होगा। The second game from Group A, Baroda versus Mumbai. ठीक है, Baroda batted first and Mumbai के against, and first day
they scored 241 for 6. ठीक है, batters who were very very impressive. Mitesh Patel scored 86. Atit Sheth 60 not out, and bowlers who were very very impressive from Mumbai: Tanush Kotian and Shams Mulani, 2 wickets each. Jinx's captaincy in the first innings was pretty impressive. We'll speak about that if we have time. Mitesh and Atit, they rescued sort of a collapse, and they had a 130-run partnership, which was very impressive. On the second day, Atit and Mitesh, they unfortunately could not carry on, and the team got a total of 290. And Tanush Kotian picked up another 2. Shardul Thakur picked up another 2, and Shams Mulani, he picked up 3 wickets in total. And in response for that, Mumbai got bowled out for 214, ठीक है, with Ayush Mhatre and Hardik Tamore, ठीक है, they showed a little bit of resilience, 52 or 40 कुछ बनाया इन लोगों ने. And Bhargav Bhatt, very very impressive guys, he picked up 4 wickets from Baroda. Akash Singh, he picked up 3 wickets. Mahesh Pithia, he picked up 2 wickets. पिथिया बोलते हैं, पथिया बोलते हैं, पिथिया, नहीं भाई ये ठीक है, पिथिया. By the end of the day, Baroda, in fact, on the second day, they were matlab 9 for 2. By the end of the day, in fact, Baroda was batting again, 9 for 2. They were after the collapse from Mumbai. And day 3, unfortunately, again, did not begin really well for Baroda. Baroda's top order struggled again. Tanush Kotian against Tanush Kotian, and until Captain Kunal Pandya, he steadied the ship off with a 55 of 144 balls. Atit Sheth with a 26, and Vitesh Patia again with a 40. They ended up with 185 runs on the board. Tanush Kotian with a 5 for. Okay, we've already discussed that. Dhwani has discussed that. How Tanush Kotian can actually emerge as one of the good off spinners. Yeah, of course. He Good can off spinner. be into the Indian team sometime soon. Himanshu Singh, a young chap, pretty tall, the spinner, 3 wickets to his name. Shardul Thakur, Mohit Awasthi picking up 1 each. And reply, Mumbai scoring at 4 and over, having lost Prithvi Shaw for just 12. Hardik Tamore got run out for about 6 runs, and this leaves Jinx Rahane and Ayush Mhatre at the crease, with the match very, very, very well poised the last day, which is Mumbai at 42 for 2, needing another 220 runs to win. This is going to be a great match, guys. Please go and have a look. Third match, Jammu and Kashmir and versus Maharashtra. Jammu and Kashmir batted first. First day, 264 for 5. Batters who were very, very impressive. Shubham Kajuria on the first day, he was 130 not out. We'll speak about the second day as well. Was retired hurt. And at 94, and then came back. And then Hitesh Walunj, he picked up 2 wickets from Maharashtra. And he continued. Shubham Kajuria continued on the second day, scoring a mammoth 255. Shivansh Sharma, their wicketkeeper, he scored 100, 106 not out. He was middle order, chipped in, with a few starts. And then, of course, they declared the innings at 519 for 7. Hitesh Walunj from Maharashtra getting 4 wickets. And they came out to bat for 7 overs. Rafiq Salam picked up that 1 wicket, and they ended the day at 21 for 1. The third day, Maharashtra ended the day at 312 for 6. Siddhesh Veer करके उन्होंने 127 बनाए, and captain Ruturaj Gaikwad with 86 runs. Middle order from these 2 batters, of course, apart from these 2 batters, they got a little bit of starts here and there, but they couldn't really capitalize. Arshin Kulkarni is at the crease. Arshin Kulkarni, he's आप लोग लखनऊ सुपर जायंट्स जानते होंगे. Ramakrishna Ghosh still there at and these 2 players, of course, at 19 and 7 respectively. Aqib Nabi, Rafiq Salam, they picked up 2 wickets each. Rudhir Singh and Abid Mushtaq picked up a wicket each, and partnership for the third wicket was almost 200 today between Ruturaj and Siddhesh Veer. So that was something very interesting to see. And the fourth match from Group A, which is Services versus Meghalaya. Services batted first day. Ravi Chauhan with 113. Rajat Paliwal, their captain, with 86 not out. Aryan Bora, 2 wickets he picked up. Rajat Paliwal, the captain, he completed his century on day 2, which was 107. And they got out at 402. Aryan Bora, he picked up 2 wickets to take his tally to 4. And Ajay Duhan on debut picked up 3. And Deepu Sangma picked up 2. And in response, Meghalaya 109
team for 5, top order failing. Their captain, Kishan Lingdo, he also failed, unfortunately. Sumit Kumar and Anirudh Balachandar, at the end of the day, they were at 34 and 41 not out, respectively. And Varun Chaudhary from services picked up 3 wickets. At the start of day 3, Sumit Kumar and Anirudh continued well, but unfortunately they got out at 87 and 69 respectively, with Meghalaya ending at 233. Varun Chaudhary picked up 5 wickets from services, and then services, who batted so well in the first innings, unfortunately, they crumbled to 57 for 6. With Poonam Punea and Jayant Goya picking up 2 wickets each, and Arjun Sharma and Pulkit Narand chipping in with 1. So this is also becoming into an interesting match, maybe 4 wickets. And you could see Meghalaya, of course, chasing a big total, massive total. But yeah, it'll be very interesting to see कि मतलब कितनी जल्दी मैच खत्म होता है. तो ये हो गया ग्रुप ए, ठीक है. इसके बारे में कुछ बोलना है तेरे को, या मैं हाँ खुद भी देखो, कंटिन्यू? मैं उस बारे में बोल पाऊंगा जिस जो मैच मैंने थोड़े मतलब ट्राई किया है देखने की, या जितना मैं कर देखने के तो पाया 3 हूँ। ही मैच थे. हाँ, तो फॉलो तो जितना मैं उसके कर पाया उतना फॉलो तो जितना देखने के तो 3 ही मैच थे, अनफॉर्चुनेटली तो ब्रॉडकास्ट 3 ही. एक तो ग्रुप ए है, ठीक है। ग्रुप ए में अगर तू देखेगा तो जब कृणाल पांड्या बैटिंग कर रहा था ना, तो कृणाल पांड्या ने कम से कम 3 ब्रेक लिए बीच में। अनिल चौधरी और नितिन मेनन आसपास आ गए, बोला भाई साहब क्या कर रहे हो आप, टी शर्ट चेंज कर लिया। अजिंक्य रहाणे ने टी शर्ट चेंज कर रहा है अपना, हाथ में वो फवारा ववारा लगाया, फुल टाइम खाया उसने। उसके बाद भाई चलो ठीक है, फिर वो आउट वाउट हो गए, उन्होंने ट्राई किया, फिर ये बैटिंग करने आए। भाई इतना बात कर रहे थे वो बरोड़ा वाले आसपास। एंड इनफैक्ट आज ये तमोरे का जो विकेट गिरा है, बहुत अलग तरीके से गिरा है। वो बीट हुआ और वहीं के वहीं खड़ा हो गया, तो बैट को लगाया, पैड को लगा, वहां से पीछे स्लिप फील्डर आया, उसने रन आउट कर दिया उसको और आउट हो गया वो। बट बॉम्बे के लिए आयुष मात्रे हैं। सो इफ एनीवन इज वंडरिंग व्हाई Upen Lalwani does not play for Bombay anymore, because he shifted his team because he wants to play all 3 formats, because of which they've got a 17-year-old boy called Ayush Matre as the replacement, which shows the depth of what Bombay has. Raj Limbani is also playing for Baroda. Unfortunately, एक ही ओवर दिया था उसको, वो अंडर 19 बैच का है, मुशीर खान का, अगर किसी को पता हो। फिर Of course. JNK वर्सेस महाराष्ट्र में शुभम खजूरिया 22 साल बाद, he's become the 22 years the second Jammu and Kashmir player to score 22nd. Shivan Sharma is the wicketkeeper who's only 21 years old, so keep an eye on that guy. Hitesh Waluj is actually a net bowler for CSK, Krishna. And he's a spinner for Maharashtra, made his debut only in 23-24. So that's one guy that you go. Rasing Salamdar, you already know about. The guy from Delhi बाइक चला Capitals. रहा हाँ भाई, वो तो बड़ा controversial है तो यार। Gaikwad is surprisingly coming at number 4 for Maharashtra, which also shows that number 4 is one of the most crucial, one of कप्तान the है most भाई. in red ball cricket. So number 4 Litin Das, number 4 Gaikwad, and Sachin Das Kulkarni, दोनों ही महाराष्ट्र इंडिया में 19 players है who are now in Maharashtra. गुजरात वर्सेस हैदराबाद बोला नहीं, बोला ना, अभी बोलेंगे। ठीक, भी बोल दूंगी. हाँ ठीक। चलो, गुजरात वर्सेस हैदराबाद, ग्रुप बी. फर्स्ट डे गुजरात बैटेड 334 फॉर 8, ठीक है. मनन हिंगराजिया, हिंगराजिया बोलते हैं गुजरात में. अरे यार, मैं थोड़ी प्रोनाउंसमेंट। हिंगराजिया, चलो ठीक है. 174 नॉट आउट, एंड दैट हैपेंड आफ्टर गुजरात वर सम 68 for 5 or 98 for 5, something like that. And then he got a partnership with Urvil Patel, जिसने भी 60 मारी. Chama Millen from 3 wickets. He picked up 3 wickets, sorry. And Saranu Nishant and Tane Tyagarajan. Saranu Nishant, we've spoken about him as the long, tall, fast bowler. They picked up 2 wickets each. And Hingraje, he played a blinder, as I mentioned. And Urvil Patel and Hingraja had a 112 run partnership. Okay? And that really put the horse on the back foot. And Urvil actually was a little more aggressive right at the start of this partnership, and but he unfortunately got out to a sweep shot. And then Hingaraja, he started smashing. On day 2, Manan Hingaraja actually wanted to continue, but he only did till 181. And Gujarat ended with another just 7 runs extra to their tally with 343. And Rakshan Reddy, he picked up 2 wickets. In response, Hyderabad scored 222 for 7 at the end of day 2. Rahul Singh, their captain, getting 56.
Kodimela, Himetej, he scored some 58, and Chamamillan scored 60. So he's handy with the ball, also handy with the bat also. All bowlers at that point in time, they picked up wickets, barring Jaymeet Patel and Rinkesh Waghela. He picked up 2. The next morning, which is the third day, Hyderabad ended up with 248, and Aryan Nagaswala, he ended up with 3 wickets. Rinkesh Waghela and Chintan Gaja, they picked up 2 wickets each. Gujarat in their second innings was 201 all out, and that was the end of play, leaving the target of 296 runs for the final day. So this is going to be a very, very interesting match to see. Please follow this on CricBars or wherever you can, Cricinfo, wherever. And a great test match, of course. ये होने वाला है, and I think Waghela. yeah, Umang Kumar scored some 85-ish. Siddharth Desai, Manan Hingraja, he got starts, but unfortunately he couldn't capitalize again. And Aniket Reddy, he started with the ball in the second innings for Hyderabad, and he picked up 5. Chama Milind and Tanit Tyagarajan picking up 2 wickets each. So this is a test match that you have to see, guys. Gujarat versus Hyderabad. Please, please, please. इस पे एक नजर जरूर रखना. हिमाचल वर्सेस उत्तराखंड, ये आता है सेकंड गेम फ्रॉम ग्रुप बी. हिमाचल बैट फर्स्ट डे 301 for 1 with Shubham Arora 118, Prashant Chopra 122 not out, and Ankit Kalsi at 57. ठीक है, and Swapnil Singh with the only wicket to fall on day 1. ठीक है, and the second day, the top 4, in fact, this led to the top 4 in fact getting hundreds, and Prashant Chopra and Ankit Kalsi were the 2 who actually got daddy hundreds. And then Prashant Chopra got 171, and Ankit Kalsi got to 205 not out, and Ekant Sen getting 101. And the fifth batter also who came out, he also scored some 56, and they declared at 663 for 3. So 8 bowlers were used in total in the entire innings, and only 3 wickets to fall. Swapnil Singh, who bowled 23 overs, picked up just 1 wicket. Mayank Mishra bowled 41 overs and conceded 161 runs and got 1 wicket. In response, Uttarakhand were 50 for 1 in 12 overs, with Vaibhav Arora picking up 1 wicket. And captain Ravi Kumar Samarth was back to the pavilion. That was the end of the second day's play, with just 21 to his name. And on the third day, Avanish Sudha and Vaibhav Bhatt, they batted really well for 120 plus runs partnership with 96 and 46 to their names respectively. And Kunal Chandela with 56. Middle order got starts but did not capitalize, and in the end they ended up with 299. Okay, so which is way below par. And Devesh Sharma then picked up 3. Arpit Guleria, Mayank Dagar, and Vaibhav Arora, they picked up 2 each to make it very easy for Himachal. It was an easy decision to make them follow on, and they are yet to open their account with just 1 over bowled in the second innings, which is 0 for 0. So not really much left in the test match for Uttarakhand, unfortunately. Himachal already first innings के हिसाब से तो जीत ही चुकी. Puducherry versus Rajasthan, which is the third game. Pudu batted first. First day, 237 for 9 is where they ended. Ajay Rohera, their wicketkeeper, with a high score of 94. Khalil Ahmed for Rajasthan, Manav Suthar and Aniket Chaudhary picked up 2 wickets each. Deepak Chahar picked up 2. Rahul Chahar with just 1. Puducherry added another 9 runs the start of the second day with and ended their score at 248. And in response, Rajasthan with 234 for 6 at the end of day 2. And Deepak Huda, their captain, he played a knock, and a very, very sensible knock at that, which was 105 of 171 balls. And other batters, of course, they got starts, but unfortunately couldn't capitalize. Manav Suthar was at 12, and Huda was still there at the end of day 2. And Ankit Sharma and Fabit Ahmed for Puducherry, they picked up 2 wickets each. Gaurav Yadav and Sagar Udeshi, they picked up 1 each. And at the start of day 3, next morning, Deepak Huda, he continued till 128, and Manav Suthar was there till about 27, and they got all out at 291, getting a first innings lead, obviously, with Ankit Sharma ending up with 4 wickets, and Sagar Udeshi with 3 wickets, Fabid Ahmed with 2 wickets. And in response, again, when Puducherry batted, they were only 207 for 6. And Akash Kargave and Ajay Rohera,
they started really well. And they were at 54 and 39, and it's a good 71 run partnership. And Anand Bias with 45. Rahul Chahar picked up 2 wickets. Manav Suthar, Deepak Chahar, and Khalil Ahmed picked up 1. So Pudu leading right now with 164 runs with just 1 day to go. But Rajasthan, unfortunately, or fortunately for them, they've got a first innings lead. The last of the Group B games is Vidarbha versus Andhra. This game moved very, very quickly. Vidarbha batted first, 118 all out. Okay, that's all they could manage. Akshay Vadkar, their captain, he showed a little bit of resilience, and of course he scored 46 not out. But no one to support at the other end, and all chipped in with wickets for Andhra. KV Sasikant, he got 3 wickets. Chirapulli, चिपुरापल्ली ठीक है चिपुरापल्ली यही नाम है उनका सत्यनारायण राजू एंड ललित मोहन they picked up 2 wickets each. Andhra batted and they finished at 114 for 1 and Hanuma Vihari unfortunately एक ही रन मार पाए. Abhishek Reddy scored 62 not out and Sheikh Rashid जिनको आप जानते हैं CSK से 49 not out. Aditya Thakre 1 wicket. And at the start of day two, Andhra completely lost the momentum, and they collapsed from a very, very strong position, which was 114 for 1 to 167, with Harsh Dubey and Akshay Vakre picking up 4 wickets, and Nachiket Bhute and Aditya Thakre with 1 each. Vidarbha then capitalized on this. They scored 192 for 1, and Atharva Taide, जिनको आप जानते हैं आईपीएल से, scoring a century and still there at 115, was still there at 115. And Aman Mokhade scored 53, and Danish Malevar, which was 22 not out. And Tripura Vijay picking up the only wicket of that innings. And at the start of day three, next morning, Tide only continued for 3 runs, unfortunately, and Akshay Vadkar and the captain getting 40. And the team total was 366. Vijay ended up with 4 wickets, Lalit Mohan with about 3, and Satyanarayan Raju with 2 wickets, and KV Sasikant with just 1. So in reply, Andhra getting 79 for 1. Abhishek Reddy is still not out at 38 there, and Sheikh Rashid is still there at 18. Harsh Dubey getting the only wicket, and Andhra needs another 239 runs on the last day of the test match. Again, a very, very promising match. Please, इसको हो सके तो follow जरूर करना. विदर्भा वर्सेस आंध्र, ये हो गया ग्रुप बी. इसके बारे में कुछ बोलना है तेरे को? हाँ, बोल. तनय थंगराजन हु मैं ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं बन गया बीच में. मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऑल इंडिया मेरे रेडियो को क्या जैसे. लग रहा है पता है, मेरे को क्या लग रहा है पता है, ग्रुप ए ग्रुप बी तक रखते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी कल बात कर, है ना? ऐसा है क्या? डाउनलोड बहुत ज्यादा, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, मतलब इतने मैच भाई, 16 नहीं, मैच। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देख, अभी चौथे दिन बाद फिर मैच ही खत्म हो जाएगा. हाँ तो रिजल्ट आएगा ना, तो वो, रिजल्ट ही आ जाएगा. हाँ रिजल्ट बता देंगे, मतलब क्या है, सही है। लेकिन एक एक मैच मेरे को तेरे से डिस्कस करना है. हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, मुझे पता है कौन सा, मुझे पता है कौन सा, उस पे नहीं, रुक जा, पहले मैं बता देता हूँ। जाते जाते मैं राजन, जरूर नमक मिर्ची वो सब मैं डाल के फिर उसके बाद मैं एपिसोड एंड. करेंगे करेंगे, एक मिनट। बट ग्रुप तनय, बी के बारे में बता जल्दी जल्दी फटाफट चल. हाँ तनय थंगराजन जो 3 विकेट ले चुके हैं और टोटल 5 विकेट्स ले चुके हैं, जो पंजाब के लिए खेलते हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है? तो ये आप भी उनको जाके फॉलो करो, ठीक है? बिकॉज वो हमें फॉलो करते हैं। गुड नाइट लेफ्ट आर्म स्पिनर अंकित कालसी। अंकित कालसी एक्चुअली एक टाइम था अंकित कालसी की लाइफ में जब उन्होंने 18 साल में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद उसने बोला कि यार मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो वो अंडर 19 स्टेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ भाई। उसके बाद थोड़ी बहुत मेहनत की, फिर रणजी ट्रॉफी में आए तो 2017-18 सीजन में बिठा के रखा था उसको। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई मेरे को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपना चांस नहीं आएगा लाइफ में कभी भी। और अंकित कालसी जैसे प्लेयर ना बहुत सारे इंडिया में, बट व्हाट इट गोज टू शो इज दैट दे, इसमें ना मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ आईपीएल या इंडिया या टीवी पे मैच आया तो ये प्लेयर खेलते हैं। ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं इंडिया में जो जेन्युइनली पैशनेटली, जब खाली मैदान में कोई नहीं देख रहा होता है, तब वो जाके रन करता है, और उनमें से एक अंकित कालसी है। इनफैक्ट यू गाइस विल बी सरप्राइज टू नो कि सर्विसेज की जो टीम होती है उन्हें बीसीसीआई एक्चुअली पैसे नहीं देती है। सो उनकी अलग से पेमेंट आती है, और उनको अगर कोच और फिजियो हायर करना हो सर्विसेज की टीम को, तो जो उनको मैच फी मिलती है ना, उससे निकाल के वो लोग हायर करते हैं। तो इसलिए हम लोग इतनी एफर्ट लगा के आपको रणजी ट्रॉफी के बारे में बता रहे हैं। तो जितना हो सके फॉलो करो, 3 मैच आ रहे तो 3 मैच देखो देखो, ऑल काम पे इंडिया मत रेडियो. जाओ, मैच देखो। और बता दे भाई तू, सौराष्ट्र वर्सेस तमिलनाडु, खत्म करेंगे उसको। क्या सीन है?
क्या मेनेसिस है क्या यार सीन है? दोनों का, यार क्या सीन है। इतना मेनेसिस है यार, हर बार सौराष्ट्र तमिलनाडु एक सर एक आया 2 बार, हम एक या 2 बार ही हम जीते हैं। जब भी तमिलनाडु के साथ मैच होता है ना, मेरे को हमेशा डर लगता है। हमें मेरी सेकंड फेवरेट टीम सौराष्ट्र है, इसलिए मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ उसके बारे में। और सेकंड फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं वहीं से हूँ, मैं वहाँ खेला भी हूँ। तो यार पता नहीं यार, चेतन साकरिया टीम में नहीं है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है उसको। तो ये बैक का है, इसलिए थोड़ा सा वो पर बॉलिंग एक अटैक। प्लेयर से इतना मतलब यार, हाँ सिर्फ चेतन मतलब लेफ्ट सगारिया आर्मर है नहीं है ना, तो तो मतलब यार ऐसे थोड़ी यार कि मतलब तुम यार इतना भाई खेलोगे। तेरे पास कौन कौन नहीं है? तेरे पास साई सुदर्शन आ गया, काउंटी से वापस खेल के आया। तेरे पास नारायण जगदीशन है, तेरे पास पर फिर प्रज्वल भी यार प्रज्वल तुम पॉल है, 35 और 5 तो नहीं हो सकते ना तेरे यार। पास बाबा इंद्रजीत व्हाट है, इज, तेरे पास मोहम्मद शाहरुख खान है, तेरे पास साई किशोर है। 6 प्लेयर तो यूजली ऐसे हैं जो हाउ इंडियन टीम कैन का यू दरवाजा डिफेंड, खटखटा रहे हैं। हाउ कैन यू डिफेंड बीइंग 35 और 5? एक तो अभी यार चट्टू ओपनिंग पेयर भी इस पुजारा बार है, चेंज कर दी अभी है। चट्टू पुजारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ओपनिंग पेयर भी चेंज कर रही है। हार्दिक देसाई नहीं है, चिराग जानी जो ऑलराउंडर है उसे ओपनिंग कराया है। पता नहीं क्या। अभी एक नया प्लेयर भी आया है, पार्श्वराज राणा करके। पुजारा ऑल्सो, एक बेचारा मेरा फेवरेट अर्पित बसावड़ा खेलता रहता है, वो भाई वॉल है वहां का, पता है उसको, छोटा वॉल बोलते हैं हम सौराष्ट्र का। वो भी नहीं खेल रहा है। अभी प्रेरक माकड़ इंडिया प्लेयर है। हार्दिक देसाई इंडिया इंडिया प्लेयर, इंडिया अंडर 19 आईपीएल टाइप प्लेयर है वो। एलएसजी के लिए खेलता है प्रेरक माकड़। अभी अभी यहाँ से जीतना तो यार, जीत गया यार, इसमें तो कुछ नहीं कर यार सकते। यहाँ से जीते तू सोच भी रहा है। यहाँ से जीत, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जीत ही नहीं सकते, ये बोल रहा हूँ मैं। ये हाँ। गया पहला मैच। और यार तमिलनाडु को पहले मैच में तमिलनाडु को बीट किया, इतना कॉन्फिडेंस हाई रहता ना हम लोग का। अभी इनिंग्स डिफीट होने वाला है, पता है? वो सब छोड़, इनिंग्स डिफीट, अभी अभी तो अभी साई लेकिन किशोर शेल्डन आएगा। जैक्सन अभी है, अभी अभी क्रीज पे है शेल्डन जैक्सन, क्या करेगा शेल्डन जैक्सन? साई किशोर को विकेट देगा। यार बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यार वो। चलो ठीक है, कोई एक तो ये नया प्लेयर लाया हो तुम, गुरजनप्रीत सिंह बोल के वहां से, हाँ। लंका प्रीमियर लीग से। ये भी एक गुरजनप्रीत सिंह, एक के बाद एक प्लेयर आ रहे हैं। अच्छा हुआ टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं मैच में, जी घबरा जाता। बट हाँ, तो ये था सीडी, कल बात करेंगे, ठीक है। 4 विकेट लिया भाई गुरजनप्रीत सिंह। हाँ हाँ, विकेट तभी लिया तो बोल अच्छा। रहा हूँ। अच्छा अब है। गुरजनप्रीत सिंह from तमिलनाडु। पर यार ये पता है एटलीस्ट तमिलनाडु का मैच यार, वो होना चाहिए था लास्ट ईयर सेमीफाइनलिस्ट। यू शुड हैव। हाँ वो मैंने लाइव मैच देखा था, जब सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हरा कोई दिया बात था नहीं, पास्ट मुंबई इज ने। पास्ट, यू टॉक अबाउट द और प्रेजेंट फिर प्लीज। फिर फिर तमिलनाडु टॉक के अबाउट द कोच ने आके प्रेजेंट बोला प्लीज, कि पास्ट अरे इज साई पास्ट। किशोर गलत डिसीजन लेता है, उसको पहले वो करना चाहिए था। वो मैच मैंने पास्ट लाइव पास्ट, यू देखा है, प्लीज टॉक लाइव। अबाउट द प्रेजेंट। एमसीए मेरे बगल में एमसीए, मतलब मेरे बगल में एमसीए स्टेडियम है हटा इधर, दिया। उधर जाके मैंने देखा मैच लाइव। साई किशोर को बॉलिंग करते हुए देखा था, बहुत पसंद था, लेकिन तब हार गए थे। नहीं आया रणजी ट्रॉफी इस बार भी। कोई बात। वैसे मुंबई इसमें मेरी सेकंड हेमंत फेवरेट टीम। बदानी ने बोला है दे रियली नीड अ फास्ट बॉलर एंड अ गन फास्ट बॉलर टू sort of make them win Ranji Trophy, otherwise they can't, unfortunately, because Chennai for the longest time मतलब we were known for spinners and you know, चाहे whether it is वो प्लेयर spinners। प्रोड्यूस करना बंद ही नहीं करते यार, एक के बाद लाइन से लाइन लाइन। पर तुम्हारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है यार तमिलनाडु का। वो जॉली रोवर से खेल लो, इंडिया सीमेंट से खेल लो, वो सब। इंडिया सीमेंट सीएसके इतना सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि इंडिया सीमेंट्स पहले से ही इन्वॉल्व है टूर्नामेंट्स में। सो दे नो हाउ टू स्ट्रक्चर थिंग्स अराउंड, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर सीएसके आल्सो। प्लस सीएसके की अपनी एकेडमी है। मेरे पास सौराष्ट्र की टीम नहीं है दोस्त। मेरा अरे सौराष्ट्र बाकी प्रीमियर लीग होता था जो बंद हो बाकी गया। टीम्स की भी आईपीएल में एकेडमीज का बात मत कर, बाकी सबका भी एकेडमीज है। नहीं, बट मैं व्हाट बस आई एम सेइंग अपनी इज टीम दैट की इंडिया डिफेंड कर रहा सीमेंट्स हैज हूँ। बीन देयर सिंस द 1960s इनफैक्ट, जब से हाँ क्या बहुत कहते टाइम हैं से वो यार। क्रिकेट में फिर एमजे इन्वेस्टेड है, गोपालन वो ट्रॉफी कितने भी ज्यादा खेलते हो आप इन्वेस्टेड है। लोग। हाँ। एमजे गोपालन ट्रॉफी भी खेलते हो, बुची बाबू भी खेलते हो। रुचि और बाबू भी बाकी खेलते सारी हैं कितनी सब। टूर्नामेंट होती है अंदर अंदर अंदर। बहुत बहुत और तुम्हारा खतरनाक, द कई बिगेस्ट टी खतरनाक। ट्वेंटी फ्रेंचाइज इज योर्स। ऐसे ही नहीं बोलते यार, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बहुत इन तमिलनाडु, तगड़ा और सीन यहाँ है पे भाई। मतलब सारे लोग मतलब कहते हैं क्रिकेट खेल के ही बड़े हुए। सो हेंस दे आर वेरी वेरी एंड ये नॉर्मल टेनिस टेनिस बॉल क्रिकेट्स और वो सब की बात नहीं कर वो रहा तो प्रॉपर। क्रेजी है, वो तो हाँ, रेड बॉल क्रेजी क्रिकेट लेवल उन पे लोगों है। ने सबने खेला है। सो इसीलिए वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है कि उन लोगों ने खुद खेली है। वो एक चीज है, इसलिए वो गेम को समझते भी, बट सब अनफॉर्चुनेटली अंकल। यहाँ मतलब वो और ट्रॉफी कितना अभी तक देखते नहीं हैं पहुंची यार, है। स्टेप अप में बट तमिलनाडु का टीम खेलने जाते तो कितना लोग इंटरेस्ट से दिखते हैं उस मैच को, कितना मतलब लिटरली एनालाइज किया, अरे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। इसलिए बहुत स्ट्रांग वो है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, लंबी रणजी ट्रॉफी देखते हैं कहाँ तक जाते हो। बट हो सके तो यार मुंबई वर्सेस बड़ौदा देखना, अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक पे, मजा आने वाला है।
और वो बस क्या एमपी का भी टीम अभी तो बारिश वारिश चल रहा है, बैड लाइट हो गया उधर भी। मुश्किल है. I would want Baroda to sort of cause an upset. क्यों भाई? पॉसिबल भी है. पॉसिबल भी है. बहुत भाई, लाल लाल रेड सॉइल विकेट होती है बड़ौदा में, बॉल इधर उधर 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 जा रहा है। बट स्टिल ब्रो, मतलब I would really कोई बात नहीं want ब्रो, रहाणे Baroda स्ट्राइक to. पे है अभी। रहाणे है मेरे पास श्रेयस अय्यर है, और है शार्दुल ठाकुर है प्लेयर मेरे पास, टेंशन नहीं है मेरे पास। सिद्धेश लाड है जो कम बैक कर रहा है मुंबई टीम में, है। मुंबई का टीम ठीक है, हो जाएगा, खड़ूस बैट्समैन। But as I see here, I think Baroda has won Ranji Trophy 5 times. Or the हाँ last that they won भाई, बड़ौदा was in ऑल्सो कम्स फ्रॉम 2000, 2000 and 2001. Baroda comes from Sayaji Rao जो Gaikwad family है, that was heavily invested in cricket, and they had very close ties to MP Holkars. So Hmm. Holkars and Gaikwads were extremely invested in cricket. So Gujarat has three teams: Saurashtra, Gujarat, and Baroda itself. Baroda. That is the amount of talent that we can produce. It's not just one team from one state. और 35 और 5 हो गए ना टैलेंट से. हाँ तो मुंबई को भी तो अभी वो किया ना। Like if I can't win in the sub region, I'll try to win in the holistic region. If I can't win there, I'll take the best zone. चलो जी. ग्रुप सी ग्रुप डी बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे गेम्स है यार. मैं आई डोंट नो इफ आई वांट टू कंटिन्यू आई कैन कंटिन्यू, बट धोनी इज आस्किंग मी नॉट टू कंटिन्यू बिकॉज रिजल्ट के बाद। आई डोंट नो. ये ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो चुका है पॉडकास्ट. हाँ तो जब इसलिए तक आपके पास पहुंचेगा तब तक शायद रिजल्ट देखना है ना नहीं. रणजी ट्रॉफी, देखो देखो रणजी ट्रॉफी देखो। But yeah, it's great. It's going to be fun, guys. We're going to bring this to you guys in as the domestic season progresses, and of course, Sri Lanka versus West Indies भी हुआ है, उसके बारे में बात नहीं किया अपन लोग. कल कल बहुत क्रिकेट है भाई, इतना नहीं पर होता, तुम लोग भी इतना बोर हो क्रिकेट जाएगा यार सुन हो सुन गया. के। अभी तुम लोग बोलोगे कि इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, इसके हाँ, बारे में नहीं बात किया, उसके बारे इटालियन में बात प्रीमियर करो. लीग के बारे में मैं बात सच्ची करो। बताऊं, इतना ज्यादा क्रिकेट हो गया, फॉलो होना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई. कितना बट स्क्रीन स्टिल, लगाएगा एक आदमी भाई, दो ही स्क्रीन but होता still, है मैच we'll में। follow what makes a difference to the Indian cricket team, which is of course this domestic structure. 100% Hence, an entire section dedicated, almost half an hour. हमने रणजी की बात कर ली होगी, and of course for रणजी ट्रॉफी के ऊपर entertainment बात की purposes. होगी। And for entertainment purposes, we'll definitely keep Pakistan as a segment always whenever they. All Whenever right, they guys, decide to like, do, share, and subscribe, comment, press the bell button. You know what to do. We are on YouTube, we are on Facebook, we are on Instagram, we are on Twitter, we are on Spotify, we are on Amazon, we are on 6 platforms. Show some love everywhere. And take care, guys.